Hello everyone. As we have already learnt about formation of rainbow in our earlier videos, now we are going to learn a new concept. So firstly, I would like to ask a question. As we know the term spectrum, now there is a question that does spectrum has only 7 colors like Vibgyor? Those are visible? No. The answer is absolutely no, because it has many colors. It's a mixture of colors, band of colors, and for these we can understand properly better with an example. Take your collection of lipsticks and nail polish. How many colors, how many shades do you have? Yeah, isn't it? It has many colors. If you're a boy, you can just look at your sister's collection. So it has many shades. Same like that, spectrum is also having many colors, but they are not visible. So what's the reason behind that? In today's class we are going to learn that. First thing we need to understand, we need to know is the rays which are having 400 to 700 nanometers of wavelength. They are visible to us. Okay, so example, what are visible? Example, Vibgyor. All these colors are having the maximum range. Its wavelength is between 400 to 700 nanometers. So they are visible. Okay. Yeah, now what about those rays जिसकी wavelength 400 nanometer से कम है? Of course that is not visible. So these rays, example, the best example, UV rays, then X rays, then gamma rays, है ना? These rays, ये जो rays हैं ये 400 nanometer से कम हैं, इसीलिए they are not visible. Now those rays whose wavelength is more than 700, of course they are also not visible. Why? Because it's more than 700, right? So if it is more than 700, it's not visible. Example, infrared, IR, है ना? And microwaves, रेडियो वेव्स, है ना? माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये आपने सुना होगा. इवन इंफ्रारेज ऑल्सो, इंफ्रारेज रिमोट्स में विल, आई मीन इट्स एग्जाम्पल, राइट? माई रेडियो वेव्स आपने कम्युनिकेशन के टाइम पे, आई मीन इन द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव लिसन दीज टर्म्स, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव. नाउ इन सबको थोड़ा सा साइड कर देते हैं. नाउ आई एम टेलिंग वन मोर कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा. तो लाइट कैन बी कैरेक्टराइज बाय इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, एंड दीज क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ द लाइट. ओके, तो हमने ये फॉर्मूला ज़रूर सुना होगा. आई मीन आई थिंक यू हैव हर्ड दिस फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्डा. ओके, सो दिस फॉर्मूला, इसमें C जो है ये वो लाइट को रिप्रेजेंट करती है, स्पीड ऑफ द लाइट, और U जो है वो फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है. सो इफ़ वी सी दिस वेव, यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक पीक से दूसरी वेव पीक तक, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड वेवलेंथ. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी जो है ये इट्स जस्ट अ सिंपल नंबर ऑफ वेव पीक्स. ओके, जो पास हो रही हैं पर यूनिट टाइम, जितनी पास हो रही हैं उसको फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे. सो तो यही रिलेशन है इस फॉर्मूले में, C इज इक्वल्स टू म्यू इनटू लैम्डा. We know that electromagnetic waves can have a wide variety of frequencies. बहुत कहीं frequencies हैं इसमें. तो इसी frequency को एक entire range में अगर हम देखें तो ये कहेंगे, हम इसको कहेंगे electromagnetic spectrum. और ये एक इसका familiar example है रेनबो, है ना? अब आप याद कीजिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको स्पेक्ट्रम यानी कि उसकी जो विजिबल कलर्स जो हैं, इनविजिबल कलर्स हैं, उन सभी के बारे में बताया था, है ना? डिक्रीजिंग वेवलेंथ और इंक्रीजिंग वेवलेंथ के रेस को. सो दैट इज़ ओनली हियर वी नीड टू लुक हियर, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना? ईजी है ना? आई होप कि आप लोग को सब समझ आ रहा है, एंड इट्स टोटली ईजी, वेरी ईजी. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. सो इफ़ वी सी हियर नेक्स्ट, इफ़ वी मूव फर्दर,
Moving to the energy of the frequency, है ना. Now we are going to learn about a special person here, that is Max Planck, है ना. Planck, this is this scientist who concluded the energy of the frequency. Okay. So what did this person do? He assumed that energy is always emitted in multiples of HU. What is HU here? H का मतलब है ये constant number है. H here is 6.626 into 10 to the power minus 34. This is a constant number. It is called Planck constant number. So H into mu. What is mu? Yes. Do you remember what is mu? It is frequency. So mu into h. Okay, so this is the thing he concluded. So what is the formula? His formula is E is equals to mu into h, I mean h mu. Okay, so E energy level जो है वो frequency का energy level है mu into h. h यहाँ पे 6.626 into 10 to the power minus 34 है. So I am repeating this again and again so that you can understand and you can learn it further. So this whole was only the basic concept for you for both the classes 10th and 11th classes, because what is this? It's a basic and it is useful in structure of atom and many of the chapters, right? It's the basic knowledge, we need to have it. So if you have any doubt, you can just comment below, and inshallah I'll be back with new long topics sooner, because it will be revision for me also, and we both can revise it together. Bye bye. Thank you so much. Jazakallah khair.